वेलकम टू द चैनल मास्टरिंग कॉमर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? जीएसटी किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शंस 99th अमेंडमेंट, 100th अमेंडमेंट, 101 अमेंडमेंट एंड 102 अमेंडमेंट. So here the correct answer is 101 amendment. Next question is the tax levied by the central government on intra-state supply of goods and services is called. ये कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज के लिए लगाया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट है बेसिकली सीजीएसटी. सीजीएसटी इज बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेल्स सर्विसेज टैक्स. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन विच टैक्स इज एप्लीकेबल? इंटर से ही पता लग रहा है आईजीएसटी, दैट इज इंटीग्रेटेड goods and services tax. Next is, which of the following document is issued by a seller to the buyer as a proof of sale under GST? Options: delivery chain, debit note, tax invoice, payment voucher. Basically जब एक seller किसी buyer को कोई चीज सेल करता है अंडर जीएसटी तो उसे क्या देता है? उसे बेसिकली वो टैक्स इनवॉइस देता है, मीन्स बिल देता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स इनवॉइस. So the next question is composition scheme under GST is available to composition scheme इन सब में से किसके लिए available है GST? Composite tax हो जाए basically, that is service providers only, large scale manufacturers, small taxpayers or exporters. So here the answer is small taxpayers. Next question is the due date for filing GSTR 3B is generally options 10th of the next month, 15th of the next month, 20th of the next month or 25th of the next month. GSTR 3B फाइल करने के लिए जनरली ड्यू डेट होती है 20th of the next month. Next question is GSTR 1 is used to file details of. GSTR 1 इनमें से कौन सी डिटेल्स को फाइल करने के लिए बेसिकली बनाई जाती है? ऑप्शंस आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई, एनुअल टर्नओवर और जीएसटी पेमेंट्स. सो बेसिकली जीएसटीआर 1 जो होती है वो इनवर्ड सप्लाई के लिए बनाई जाती है. एट्थ इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज करंटली नॉट अंडर द जीएसटी डिजाइन? जिसे एग्जम्पशन है. ऑप्शंस आर अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड वाटर और मोबाइल फोन्स. So the correct answer is alcohol for human consumption. Next is, what is the minimum turnover limit for registration under GST for service providers in most states? Minimum limit क्या है turnover की रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी में? बेसिकली फोकस करना है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए. गुड्स की बात नहीं हो रही. गुड्स में थी 40 लाख जो हमने इससे पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किया था, उसमें वो क्वेश्चन था. इसमें पूछा गया सर्विस प्रोवाइडर्स, तो इसकी लिमिट है 20 लाख रुपीज. Next is, what does SAC stand for in context of GST? SAC किस चीज पर स्टैंड करता है? ऑप्शंस सेल्स अकाउंटिंग कोड, सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन या स्टेट असेसमेंट कोड. तो बेसिकली जीएसटी में स्टैंड करना है तो आएगा सर्विसेज अकाउंटिंग कोड. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज, हु इज रिक्वायर्ड टू जनरेट एन ई वॉइस अंडर जीएसटी? इसमें से किसको ई इनवॉइस जनरेट कराना पड़ता है बेसिकली? ऑप्शंस एवरी टैक्स पेयर, ओनली SEZs that is special economic zones, certain businesses above threshold turnover या फिर transporters only. So the correct answer is certain businesses over threshold above threshold turnover. Next question is, what is the penalty for not registering under GST when liable? इसमें से किसे पेनल्टी क्या पेनल्टी है जो पे करनी पड़ती है जब हम जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते? सो बेसिकली 100 rupees per day, 5,000 rupees, 10,000 rupees or above of tax evaded, whichever is higher, or 1,000 only. So the correct answer is 10,000 or amount of tax evaded, whichever is higher. 13th question is time of supply under GST helps determine. इनमें से टाइम ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी किसे हेल्प करता है? बेसिकली द प्लेस ऑफ सप्लाई, द रेट ऑफ टैक्स, when tax becomes payable and credit limit. So the correct answer is when tax becomes payable.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज GSTR9 क्या चीज है? मंथली रिटर्न है, एनुअल रिटर्न है, रिटर्न फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई है। सो बेसिकली GSTR9 क्या है? एक एनुअल रिटर्न है। 15th question is what does ITC stand for in GST? ITC किसके लिए स्टैंड होती है GST में? ऑप्शंस आर इनपुट टैक्स कैलकुलेशन, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, इनपुट टैक्स क्रेडिट या इंटीग्रेटेड टैक्स कंप्लायंस. So the correct answer is input tax credit. So here is a question number 16, which is a bonus question. You have to answer the question in the comment section below. Which of the following taxes is levied by the state government under the GST system? स्टेट गवर्नमेंट का पूछा है, ठीक है? तो स्टेट गवर्नमेंट इनमें से कौन सा टैक्स लेवी करता है अंडर द जीएसटी सिस्टम? सीजीएसटी, मैं फुल फॉर्म बता देती हूँ आपको, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज आईजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज एसजीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी. प्लीज इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा. एंड this is all about this topic. Please do like, share and comment the answer below. Please subscribe to the channel Mastering Commerce. Thank you so much for watching.